See, basically, home science is a course that has been designed to create people to understand dietitian, nutrition programs and all. Okay, and I want to say something important. See, the world has moved on to very high-powered careers. Explore them. Okay, because some of the things were designed for a specific time period in life. Okay, there was a need for that. अगर आप जो है आपके पास अगर आईफोन है तो आपका माइंड भी आईफोन टाइप होना चाहिए, राइट? हम लोग आज क्या हो चुके हैं कि आवर ड्रीम्स आर not matching the way the industry is working. So I would highly recommend to explore options, not just 1 year courses, and see to it that you get more exploration कीजिए आप. See, this migration happens especially after studying 10 years abroad, and every state has a domicile criteria. Like as far as Karnataka is concerned, कर्नाटका का जो सिंपल डोमिसाइल है, जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि द स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड मिनिमम 7 years in Karnataka, should have completed 12th from state CBSE, ICSE, IGCSE or NIOS from Karnataka. So this is the first clause which will not apply for NRI students क्योंकि आप 10th वहां तक पढ़ के रहते हैं. जी जी. जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्लॉज है जिसका इस्तेमाल करते हैं, that clause is student must study 11th and 12th in Karnataka. Either of the parents must have studied 7 years in Karnataka. This is where most of the NRIs, avail the benefit, because आप जब नीट लिखते हैं, नीट इज ए एलिजिबिलिटी टेस्ट. ओके, नीट का जब स्कोर आ जाता है, यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग. जो 15% सीट होते हैं, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग विल कवर ऑल द एम्स, जितने भी इंडिया में एम्स हैं, इट विल कवर दैट, एंड इट विल कवर 15% गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में बैंगलोर में 200 MBBS सीट्स हैं फर्स्ट ईयर के लिए, उसके 15% 30 आर ओपन फॉर ऑल इंडिया कोटा. तो इसीलिए जब नीट का रिजल्ट आता है तो पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो जाती है, सो दैट students who want to participate for all India quota, they will participate and then they will go for state quota. So by fulfilling the domicile criteria, students of that state can participate in that state counseling. तो होता क्या है कि जो बच्चे, चाहे वो सऊदी में, दुबई में 10 साल पढ़े हो, 2 साल आपने इंडिया में PUC कर लिया, आपका नीट का स्कोर 550 आ गया, आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी. Now in Karnataka, MBBS is offered in 4 slabs. सबसे पहला होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट. अब कर्नाटक में 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं. मान लीजिए कि आपकी बेटी या बेटा है, उन्होंने नीट 2022 लिखा और वो डोमिसाइल फुलफिल करते हैं कर्नाटक का, और उनका स्कोर था 550. It is very likely that he or she will get admission to government medical college where the fees will be only 70,000 per year. Right? Now, if the same student, okay, not your child, but somebody, if a student, if he is NRI or anybody who fulfills the domicile, if the score falls below 550 and 500, most likely he or she will get the private college में government seat, which is going to cost 1,41,000 to 2 lakh rupees per year. Double हो गया. I am not adding the hostel cost. I am not adding the additional cost that the colleges ask, which is for their some development fee. Like I know a medical college in Bangalore, आप CET को 1,41,000 भरते हैं, कॉलेज को फिर आपको 85 बनना है, because उनका कुछ चार्जेस है वो, right? जी. Now the third is, if a student scores more or less than 450 or 445, the only available seats are the management quota seats in private colleges, which will cost 10 lakhs per year, 10 or 11 lakhs. Again, यहाँ पे कुछ colleges हैं जो मैं जानता हूँ जहाँ पे फीस 16 लाख एक साल का है.
Now, people who create the story of 85% scholarship, they are actually creating the story saying that government में मिलेगा तो you will get at the 10% of the bigger thing, no, or even lesser than that. मान लीजिए अगर आपके बच्चे का स्कोर जो है 400 है, आपको पक्का मैनेजमेंट सीट मिलेगा MBBS. A student But who we have to scores pay 16 400, lakhs rupees. but you have to pay minimum 16 10 lakhs or maybe 20 10 lakhs. to 16, 20 lakhs. Okay, there is no scholarship. If a student's father is a billionaire, he fulfills the domicile criteria, and the student scores 600, that student will You will get a free safely seat. get a seat in the best government medical college in Karnataka, because there the government doesn't see your income. आपको True. 600 से ऊपर रैंक अगर ला लेंगे, अगर आपने डोमिसाइल फुलफिल किया, तो आपको GM में भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी. नाउ व्हाट हैपेंस इज पीपल थिंक, ओके, व्हाई शुड आई स्टडी इन गदग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो तो टायर 3 सिटी है. Why should I go for that college? My father has money. I will go to a good private college in Bangalore. I will stay with my uncle. I will stay in my own house. तो ये सारे कॉम्बिनेशन वर्क होते हैं. So there is no scholarship. The only scholarship is marks. The better marks you get, the cheap the education becomes. और ये गलत फहमी है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर बनने लाखों के रुपए होना. डॉक्टर बनने लाखों के रुपए नहीं चाहिए. डॉक्टर बनने के लिए 600 मार्क्स चाहिए. 600 इज द बेंचमार्क. 720 को 600 स्कोर करो, चाहे आप +2 में 50% लो. I mean 50% is minimum. But need scoring is important. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah, Assalamu alaikum, Amin bhai. So actually, I just wanted to clarify on the domical. Actually, they in the CET brochure this year they have added the mother tongue should be Kodava, Kannada, and Tulu. If one of the mother tongues belongs to this language of the parents or the candidate, and it should be there in their the TCR, the marks cards. So then only they will be eligible for the domicile rule. Actually, that's point number one. Point number two. That's an additional domicile clause. Oh, is it? That's okay. not a mandate. Additional, मतलब एक और स्कोप बढ़ा दिया उन्होंने. आप 7 साल नहीं पढ़े, राइट, फिर भी आप जो है कनाडा है, उसके लिए कनाडा टेस्ट भी होता है ना. They have to take a Kannada test for that. Okay, so my second question is, I think many students are here. So, we also had a sample, candidate last time. So people try to get into engineering, and if they don't get into engineering, they will be like running behind the management seat. So as per my knowledge, it will at least cost minimum of 2 lakhs to 4 lakhs in a good college. So what are all the alternatives that you want to suggest? I think a lot of audience are here. So many students miss the bus. They will not get the rankings or good colleges. At the end, they'll run behind the colleges and get the seats. Is it worth to spend 10 to 12 lakhs only on the fees and get an engineering seat? Yeah, I agree with you. It's absolute chaos there. Students think that doing only engineering will land them into great jobs, and they are paying 3 lakhs 4 lakhs. See, if you have money, spend it. मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि फर्स्ट यहीं पर जो है जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पेरेंट्स का, they don't teach the kids the value of money. How do you make 100 rupees? Okay, हम लोग जो है बच्चों को स्पून फीडिंग करते करते यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि बच्चे एंड में हमारे ऊपर लाके बड़ा लड्डू रख देते हैं, राइट. सो students who are not able to perform well in CET, ask yourself what went wrong, repeat CET, get a better rank. Through government counseling, get into a better college or a college of your choice. Seat nahi mili, 1 saal waste ho jata, let me go and join some BTech preparing management seat. Bhai, analyze karo. There are people who are doing BCA, BSc computer science and also getting into the same roles. Today, world's top 15 companies don't want a degree. I mean, वो बड़े companies हैं, they can say anything. Reality भी वैसी है. They are looking for talent. You don't have talent and you are replacing talent with money. Tomorrow, people will not give you a job just because you are a degree holder. They will give you a job because you are talented. People are looking for profit from you. So my request would be, please be wise. At least जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, don't commit mistakes of
not preparing for CET, not preparing for the competitive exam. बहुत बच्चे जो है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. I know thousands of kids इतने ओवर कॉन्फिडेंट, आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो दे थिंक दे विल गेट गुड मार्क्स. दे नो दे हैव नॉट डन वेल. प्लीज एक्सेप्ट वेयर यू आर एंड वर्क ऑन इट. देयर नथिंग हार्म इन एक्सेप्टिंग कि आपके अंदर क्या लैक्यूना है और उसके ऊपर मेहनत कीजिए. अच्छा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. पहली पॉइंट ये है कि सिविल सर्विसेज इज द टफेस्ट एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन इन द एंटायर वर्ल्ड. सारी दुनिया में इंडिया का जो सिविल सर्विस एग्जाम है, दैट इज द टफेस्ट एग्जाम बिकॉज इट्स क्वाइट एग्जॉस्टिव. सिलेबस नहीं है, उसका एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है. Everybody is, preparing based on some assumptions and some format. So UPSC requires dedicated effort. Very few people can balance between doing another course or job and UPSC. So it depends on your capacity. आपकी capacity के ऊपर जाएगा कि आप दोनों साथ कर सकते हैं. My suggestion is choose any one. अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं, उसका एडवांटेज ये है कि यू विल नॉट हैव अ गैप इन एजुकेशन. अगर आप यूपीएससी ट्राई करते हैं तो आप यूपीएससी करके 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देन यू कैन गो बैक टू मास्टर. दैट इज आल्सो पॉसिबल. सो इट इज प्योरली हाउ कैन यू कोप अप द ट्रेनिंग प्रोग्राम. अभी यूपीएससी कोचिंग के लिए कश्मीर में भी काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं. वहां पर जब डॉक्टर शाह फैसल साहब आए थे फर्स्ट टाइम 2010 में, उसके बाद काफी वहां पे मोटिवेशन आके है. तो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं. एक काउंसलर को मिली है और वो बताएंगे कि आपको एफर्ट इंडेक्स क्या है. व्हाट इज द एफर्ट इंडेक्स फॉर यूपीएससी. क्योंकि यूपीएससी की आज जो है बहुत बड़ा क्रेज है. पीपल आर डूइंग यूपीएससी बट दे शुड नो दैट दे आर कंपीटिंग विद इंडियाज बेस्ट ब्रेन्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ यूपीएससी टॉपर्स आर इंजीनियर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर आईआईटीएंस. तो आप सोचिए कि आपका कॉम्पिटिशन कितना टफ है. So you need to give takkar to them, and that is where focus is very important. So clarity अगर मिलेगी तो होगा. हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. आज के प्रोग्राम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सबको पता है कि प्रोग्राम आज का कितना हेल्पफुल रहा है. तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. सर, इस साल कुछ बच्चियों ने एमबीबीएस के लिए कोशिश की थी. आखिर में बीडीएस में उनका दाखिला हुआ. उसमें एक बच्ची है सर जो जिसका दाखिला नहीं हो पाया क्योंकि केईए में उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उन्होंने मतलब रॉन्ग हो गया था. तो इस वजह से उनको ओटीपी नहीं आ पाया और उनका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ है. तो 2-3 बार बैंगलोर में केईए ऑफिस में भी जाके इसके बारे में बताया तो वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला. अभी वो बोल रहे हैं कि आपको पहले आते तो हम कुछ कर सकते थे. अभी डेट खत्म हो गई है. क्या उस बच्ची को कोई और मेडिकल फील्ड में कोई आप कोर्स सजेस्ट करेंगे या फिर दोबारा से इस साल दोबारा नीट लिख के कोशिश करें सर? देखिए, अगर स्टूडेंट का स्पेसिफिक कोर्स करना है और उसके लिए एडमिशन केईए के थ्रू आसानी से होगा, क्योंकि केईए आपको एडमिशन दिलाता. मेडिकल के सारे कोर्सेज का एडमिशन चाहे वो मैनेजमेंट हो या गवर्नमेंट हो, वो केईए के थ्रू ही होता है. इवन इफ यू आर पेइंग 1 crore फॉर एमबीबीएस, उसका भी ऑर्डर जो है निकलता है केईए के थ्रू ही. ओके, तो अगर स्पेसिफिकली बच्ची वही कोर्स करना चाहती है तो नीट रिपीट कर सकती है. ये जो इश्यूज है ना, मैं देखा हूँ, इट इज अनफॉर्चुनेट. हमको ऐसे भी किस्से मिलते हैं. मॉपअप राउंड में कल ही मुझे कॉल आया था कि सर मेरा स्कोर जो है 485 था और 450 वालों को उन्होंने 450 वालों को उन्होंने जो है बुला के सीट दे दिया. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉपअप राउंड. और तो यहाँ पर जो अब ये गलती जो एक बच्ची ने की, उसने जो मोबाइल नंबर, ये दूसरों के लिए इबरत है, दूसरे बच्चों के लिए, कि आप जो है इसका खास ख्याल रखें और आप कोशिश करें कि जो है आप पूरी तरह जो है जाने कि व्हाट कैन गो रॉन्ग. ये बहुत ही अफसोस की बात है. सुन के मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि ऐसा हुआ है. बट वेरी वेरी डिफिकल्ट. अनलेस यू हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस, वहाँ पे कुछ नहीं होता. एंड ज़रूरत भी है कि ऐसे मामलों को हल करने के लिए कोई एक सेल हो. बट ये पूरा ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं यहाँ पर. अगर कोई मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट से, दे विल blame the student only. You cannot blame anybody else. Okay, first question was on IITN. See, IITN is the brand. Okay,
आप IIT से मेटलर्जी भी करेंगे तो आपका ब्रांड बन जाएगा, लेकिन क्या वो ब्रांड आप प्रूव कर पाएंगे? कैन यू मेक दैट ब्रांड हेल्प यू टू ग्रो? सो दैट इज वेयर पीपल गेट स्टक. ओके, आजकल तो स्टार्टअप क्रेज है. So every IITian is joining a startup because they are offering mouth-watering salaries, 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ का. ये सैलरीज पहले सोचते भी नहीं थे, लेकिन आज स्टार्टअप्स जो है फंडिंग लेने के लिए दे विल इन्वॉल्व IITians, राइट? तो IITians are in demand. The only thing is how do you plan your next 10-20 years, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका स्कोप. At the same time, there are even spectacular failures in IITians. एक रिपोर्ट भी आई थी कि there were many kids who were not even able to pass IIT. They had joined IIT through whatever means they could join, कोटा में या कुछ भी. दूसरा सवाल था on how do you balance religion and career. At a personal level, आप जितना हो सके अपने रिलीजन को जो है, हमारा ताल्लुक जो है अल्लाह से गहरा होना चाहिए. और मैं एक बहुत ही बड़े शख्स से कई मरतबा डिस्कस किया इसको, जियाउल्लाह शरीफ साहब हैं जो इंडिया बिल्डर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं. वो हमेशा कहते हैं कि आपकी जो मोहब्बत है अल्लाह से वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, राइट? और वो मुझे कहते हैं कि मैं जब भी कोई परेशानी में होता था तो मैं हमेशा कहता था कि या अल्लाह मुझे बचा ले. इट वाज एज सिंपल एज दैट. So for me, religion is about your connection with Allah subhanahu wa ta'ala, your love for the practices, right? हमको जो है, हम सब जानते हैं कि इसके बाद एक ऐसी जिंदगी आने वाली है जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है. तो उसको सामने रखते हुए, being conscious about all that, we should definitely do our best and strike the balance. Sports as a career, unless you are not clear about how many years you want to play sports and what is the, because जितने भी sports के player हैं, आप देखिए, everybody has retired. Somebody retires at 35, somebody at 50, somebody at 40, right? तो आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो अंडरस्टैंड कि क्रिकेट में आप कहाँ तक जा सकते हैं, एंड हाउ गुड यू आर एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर. कल भी एक बच्चा आया था, उसका शौक था फुटबॉल का. वो कहता है कि सर आई कैन प्ले फुटबॉल एनी डे एनी टाइम. सो आई आस्क्ड हिम हाउ मेनी इयर्स यू वांट टू प्ले फुटबॉल. आप कितना पैसा कमा सकते हैं फुटबॉल से, आप फुटबॉल के बारे में कितना रिसर्च किए हैं. ही हैड नो आंसर्स. सो दैट विल नेवर वर्क. स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस के लिए यू नीड टू बी ऑन ए रूटीन, डिसिप्लिन एंड इनटू द सिस्टम. यू नीड टू फिगर आउट. अगर आपको कराटे के चैंपियन बनना है तो आपको मालूम होना चाहिए कराटे में नेक्स्ट लेवल क्या करना है. जी, ये परेशानी आती है पेरेंट्स को when we have certain fears and we have certain things. First, there are certain courses which are good in India itself. You don't have to go abroad. For example, MBBS. People can become a good doctor here. The only problem is the child is not able to break that ceiling. They are not able to score more than 500 and not able to get that marks. तो ऐसे बच्चे जो है पहले, और ऐसे पूरे तो फर्स्ट इज फाइंड द बेस्ट. इंडिया इज एजुकेशन. उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे कोर्सेस हैं, then it's completely a call by the parents. I can't go into that. Maybe I can personally, one-to-one understanding the family better, I can guide them rather than guiding on a public program. See, law requires critical thinking. It requires long hours of study. It requires analyzing facts, remembering and recalling judgments. Okay, depends on what kind of a lawyer you want to become. Criminal lawyer अगर होना है तो उसका mindset अलग होता है, right? So lawyers are good listeners. They don't speak much. They speak only when they are paid to speak. Okay, बहुत अच्छा सुनते हैं वो. And they speak few words because they have to be legally correct. उसके लिए एग्जाम्स होते हैं. उन एग्जाम्स को जो है पास करना पड़ता है. पहले जो है फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद जो है थियोरी होता है, ताकि फिजिकल टेस्ट में जो पास होते हैं they can clear the theory part. I think I would request people to watch the video than
इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इसके बारे में बोलेंगे तो सारी रात चले जाएगी। या पायलट, कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो मिलता है ना, CPL, yeah, you can choose pilot training in South Africa, US, Europe, Australia. The main thing here is your money factor and the time that you can give yourself for settlement. MBBS, pilot are all late settling careers. आपको instant जो है पैसा नहीं मिलेगा. I think this was part of the program also. In India, we have got 4 types of scholarship. The first is the government scholarship, which we don't know till when will the scholarship continue. पता नहीं है. For higher education in India, there are 2 scholarships. One is post-matric scholarship and the other one is merit cum means scholarship. It will not fulfill your entire fees. लेकिन अगर आप जो है इंडिया के प्रीमियर कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे IIT, NIT, एम्स, नेशनल लॉ स्कूल, एम्स में तो फीस कम होती है, 1000 रुपये होती है फीस बस, लेकिन IITs में द फीस इज अबाउट 4-5 lakhs. If you crack the IIT exam and if you get into IITs, any of the IITs or triple ITs, आपकी सारी ट्यूशन फी जो है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप से आएगी. मतलब अगर आपने IIT मद्रास में ज्वाइन किया बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, आपने मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप अप्लाई किया, तो आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस है 4 से 5 लाख पूरी मिलेगी आपको. सो आपने MBA ज्वाइन किया कैट के बाद, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, आपकी फीस होगी 7 से 9 लाख साल का, तो वो पूरा फीस आपको मिलेगा गवर्नमेंट से. So in terms of amount, the largest scholarships are given for students who are studying in national institutes, because all these national institutes are government funded, and if the government gives scholarship also, it is taking from one pocket and giving in another pocket. Okay, government पैसा निकाल के अपने ही इंस्टीट्यूट पे दे रहा है. So government also is win-win situation, बच्चे के लिए भी win-win situation. दूसरा जो होता है वो है NGO scholarships. अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे NGOs के ज़कात के पैसों को scholarships में देते हैं. अब NMH ही ले लीजिए, आप भी देते हैं scholarship for students. वैसे बज़म निस्वान है, दानिश है, there are so many NGOs. The only thing with all the NGO funds is ये zakat based है. So there is a scrutiny, there is question, तो zakat based scholarships हैं. तीसरा जो scholarships हैं वो है CSR. Now CSR scholarships जो हैं ये शुरू हुए 10 साल पहले, जब गवर्नमेंट 6 या 7 साल पहले जब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी CSR एक्ट के बाद ये कहा बड़े बड़े पब्लिक लिस्टेड कंपनीज से, जैसा ACC सीमेंट है, फेयर एंड लवली है, या टाटा है, या कोटैक है, इन सारे कंपनीज को गवर्नमेंट ने कहा कि आपका प्रॉफिट का 2% यू हैव टू गिव इन CSR एक्टिविटीज. सो सम ऑफ देम चोज टू गिव स्कॉलरशिप्स. जैसा अभी एक कंपनी है, उसका नाम है मर्क इंडिया. ये इंडिया की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी है मर्क. तो इनकी एक स्कॉलरशिप है 10th के बाद जो बच्चे 85% लिए होते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप. एंड अप्लाई करने के बाद उनका एक टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है. अगर आपने दोनों को क्लियर किया, यू आर सेलेक्टेड फॉर 35,000 पर ईयर फॉर 2 years, सॉरी फॉर 5 years. आपका PU, आपका डिग्री पूरा होने तक आपको देते हैं. तो हमने हमारे NGO से लास्ट ईयर 132 बच्चों को अप्लाई करवाया था, जिसमें से 65 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड एंड द टोटल वर्थ इज 1 crore. मतलब उनका 65 into 35 into 5 gives 1 crore. तो CSR स्कॉलरशिप्स हैं जिसको आप टैप कर सकते हैं. और चौथा जो है वो इंडिविजुअल, आई मीन ये आइडिया तो मैं दे रहा हूँ बट बच्चों के ऊपर है. देयर आर मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू डू फंड रेजिंग. मिलाप है, केटो है, इंडिया ज़कात है. वहाँ पर भी आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे अपने खुद का जो है केस डालते हैं कि मैं फलां स्टूडेंट हूँ, मेरे माँ बाप की ये तकलीफ है, मुझे फंड कीजिए. दिस इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग. तो स्मार्ट बच्चे जो है क्राउड फंडिंग से भी पैसे उठा रहे हैं. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू सेल. एग्जैक्टली, जिंदगी पूरी वही है ना. How do you market yourself? Assalamu alaikum to everyone. This presentation by Ameen Abudasir sir was very informative and helpful.
I'm studying currently in class 10 and I like physics and I'm very much research oriented. Can you please tell me what all the careers like can I get based on physics? Great. Nice to meet you, Mutsim. Thank So you. after your 10th, get into PU Science. You could choose PCMB or PCME or PCMC, whatever suits you. And after that, prepare for the IIT JEE exam and try to get into 4-year Bachelor of Science program at IISc. Because getting into IISc will be a perfect launchpad to research careers. In case you are not able to get into IISc, then you can study physics as you can study uh, BSc Physics in a couple of IITs, from where you will get an amazing start for your career. And try to get into the IITs or the IISc where you can really move ahead in life, because that's where you will understand. You will find a better platform to get into research. Okay, sir. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum. This is Shahabuddin here in the name as Shadwes. मेरा question है to Mr. Amin. While my question is about, I come from a coastal side of the Karnataka. We in our community we have youth aged 16 to early 20s, where they have done limited education. Some are probably 10th or 12th, or maybe went to degree and then they dropped out. uh, while their education is limited, I see them, they are quite sportive, they are quite physically, mashallah, healthy and fit. What sort of skill you think we can imbibe in them so that it helps them to land up in better careers? What they all end up doing is they end up taking odd jobs in Gulf with a very low salary, and it gets a very difficult life itself in a starting early age. So what sort of they are skilled with their health, with their mm, passion to work. Can we, this is one question. Second question is how we can imbibe some kind of skill in them so that they can we guide them to get into some sort of defense part of these are the two questions. A very important aspect that we see today. A lot of youth are hurrying to start making money. I mean, some people are going to Gulf, some are dropping in right away in 8th standard, 9th standard. What I would tell is, see, the boys especially who are very athletic and who are keen to do things by hand, these boys need to be given a direction. Somewhere we need people to talk to them on one-to-one, because the peer pressure is what is pulling them back. If we do a group session, then again it will go out, because they will all feel, "Arey, let's all be together." And all. If you catch them individually, put them on a mode of understanding how the world works, what makes a difference. And the biggest hindrance is the shortcut thing that they want in life. How do we tell them that in long term you can actually do more rather than seeing the short term part? So if we can first connect them, then it will be the first icebreaker. Moving next, we will have to look at the skill development council programs. A lot of skill development programs are there. The government has so many, more than 50 skill development councils in the country. A lot of them don't know what is beyond the horizon for them. Like the other day, we were discussing, there are people who are making lakhs of rupees as plumbing contractors, plumbing ka kaam. If you look at their history, most of them started as plumbers. Today, in Bangalore, there is a skilling center, joint venture between Ashirvad Pipes, and Ashirvad Pipes has a full-fledged plumbing course which they do. Why are these big companies doing this course? Because they want their brand ambassadors, people who will recommend that, right? So somebody who starts as a plumber who understands the whole industry, he can set up a website, he can create an app, right? There is so much scope. The problem is they are not taught entrepreneurship. They are told, if you become this, you will just get a job. Don't teach them that every entrepreneur was a worker once.
Today, all the big businessmen, they started as workers. They learned from somebody else. They copied, they imitated, they understood the market. So when we can talk to them at one-to-one level and present them the different opportunities, the less traveled path, right? So then probably, and I think the biggest problem for them is they don't want to do anything theoretical. I don't want to do a diploma course. I want to do something in where another problem is, the gratification part is the toughest part. They want to feel successful. They want to have the fame. That has to be, shown a true picture. Look, you will get famous, you will get money, you will get greatness, but don't be a helicopter, because helicopters, they take off where they stand and they can't go high. See an aeroplane, it runs on the runway for about 2-3 kilometers and then it takes off, right? So we need to talk to them, and if we can show them these things, it is great. I mean, as part of the Higher Education Council, I was recently in a meeting, and where today I see that Infosys is offering 12,000 free programs to students who are doing degree in Karnataka. They have a tie-up with the Karnataka State Higher Education Council. NASCOM has a tie-up, right? All these courses require discipline, which is the missing element here. भाई मुझे बैठ के मेहनत करना, इस फैक्टर को कहाँ से लेके आएंगे आप? And I know a lot of people who have come to me and told, sir, I would like to be a salesman. Why? I love to hear to music. I want to stand there, enjoy. 18,000. भाई आप 20 साल भी वहाँ घटाएंगे तो आपकी सैलरी 30 से 40 नहीं होगी. We need to tell people how, as they become old, they need to be masters and they need to get more money. ये समझाने वाले चाहिए ना. All this is because the schooling system doesn't even talk about future. And when we people go to school, they say we don't have time. So hoga kya? Let's work on that. Assalamu alaikum, Arvind Mudassir Sahab. Walaikum salam. Firstly, I apologize for the earlier inconvenience. It was a technical issue. So coming back, I had a few questions in mind, but I think most of them have been answered regarding the scholarships, which was supposed to be part of this session, which was missed, but you covered up with the recent question, which is good, alhamdulillah. Second part was regarding the timing of this session. It was coinciding with the Isha time, especially in India. That's where, because we were also part of trying to reach out to more kids and students, basically. So if that can be accounted for the next session, inshallah. And the final questions was regarding the turnaround audience, right? Somehow we planned this in even coastal Karnataka, where you were part of as a resource person, but somehow we feel that there's the constant touch with the students is missing. So maybe something which even the organizers can work upon, wherein at masjid level, to start with, maybe drive it from the center or the state level, wherein first the masjid officials become aware of this career guidance and they embrace it, and we have it like kind of a constant every year, this kind of session happening. I would say that would be more impactful, because yeah, that's where my question was, how could we, I know it can't be answered in instantly, but there's something which someone can take it up, and maybe we can have a second round of discussion, inshallah. See, I am ready to do. I'm sorry. The final question is regarding the good colleges. I think that is something which many students have the questions in the mind. I know we can Google it up, but it would be good based on the experience if you could list down some of the good colleges, including the central ones, state ones, maybe a kind of a flyers that would be like easily helpful to circulate among the students, maybe. Yeah, Inshallah, we are working on content as much as we can. And my feeling is, if we have to do it more, then there need to be more people who can have information at their hand. I'm ready to do a train the trainer session. I'm willing to train them on how to conduct career guidance sessions, and we reach more. This is a very neglected area, but there are Durusta, at least now we see NGOs realizing, because just giving scholarship will make no sense. Because if we cannot give them guidance, then the children will take their own decisions and then come back to us and say, give me money. Okay.
So I think we should also look at, all scholarship giving organizations to have a career orientation program to their beneficiaries, mentor them, involve them. At least those people who receive the scholarship should be given additional power, additional information and guided, inshallah. So when you see so many questions from an audience of 25, 26 people, imagine the questions which are there in the minds of thousands of people. अब यहाँ 25-30 लोग हैं और YouTube पे भी कुछ लोग होंगे. आप सोचिए कि कितने क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स कौन देगा. आज NMH में प्रोग्राम किया तो there is a bridge. So there is a need to do more of these sessions. We need to sensitize the colleges, the schools, and we need to ask them to do it as part of their curriculum. Because it's not about me doing every time. Everybody has to do it. It's their role. The first question, my daughter has the confidence to appear for NEET, doesn't have the confidence for MBBS. I think let her first get the NEET score, what she has to get. MBBS, people join, they faint, they take a break, all that. That is different story. That time will teach her what she will do or not do. Because MBBS here is not just about you, right? It's also about your finances. Like, for example, if you don't get good marks, then you pay heavy money. So if your problem is money, then of course you will feel low confidence. Like, why don't I have the money? I can't spend 10 lakhs per year. So my request is focus on the NEET exam. Meet doctors, understand their lifestyle. यहीं पर वही सवाल आता है, are you ready for 15 years of hard work? 15 साल लगते हैं, कोई मजाक नहीं है सेटलमेंट होना. It's not. People start seeing great money only after 35. उसके बाद तो you'll have to quit. Second question, JEE and KSET. KSET is for admission to all the engineering colleges which are in Karnataka. JEE is for admission to IITs and NITs only. It's like, do you want to get into business class or economical class in the flight? Okay. It's only a matter of quality. अगर आप JEE crack करते हैं तो you get into NITs. If you crack CET, you get into the best colleges in Karnataka. अच्छा, डिफेंस में सी ये अवेयरनेस की बहुत ही बड़ी कमी है ना भाई. हम आज कितने 30 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कौम क्या कर रही है. मैं आपको बताऊं कि अवेयरनेस का जज्बा क्या होता है. मैंने अपना चार्ट बनाया 2015 में. 2018 में एक बंदा तमिलनाडु से मुझे लिखता है मेल, सर मेरी बहन की शादी है और मैं जो है उसकी शादी का वेडिंग कार्ड आपके करियर चार्ट के नीचे डालूंगा. तो ही ट्रांसलेटेड द एंटायर करियर चार्ट टू तमिल, मतलब हेडलाइंस, और नीचे जो स्पेस था, थोड़ा स्पेस, एक तरफ उसने लड़का और लड़की का नाम डाला और बैक साइड में उसने PU का चार्ट डाला और उसके नीचे उसने डाला लोकेशन ऑफ द मैरिज हॉल. हमको जिम्मेदारी लेनी होगी साहब. कौन करेंगे बोले तो सबको करना है, सबको जिम्मेदारी. 25 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का वेडिंग कार्ड छपाते हैं, किसके लिए? डस्टबिन में जाएगा वो. तब तक कम्युनिटी के प्रायोरिटीज नहीं रहेंगे. आपके पास जो है जगह है, मस्जिद है, मस्जिद में आप जो है संडे के दिन आप एक एक्सपर्ट को बुलाइए अपने मोहल्ले में. भाई हमारे मोहल्ले में फला आदमी जो है ही वर्क्स इन फार्मेसी कंपनी, फला आदमी जो है ही इज ए ट्रेन ड्राइवर. बुलाइए, यंगस्टर्स को इंटरेक्ट कराइए. 2 मस्जिदों में करेंगे, 10 में करेंगे, बढ़ेगा. द प्रॉब्लम इज मेहनत लगता है इसमें. इट्स नॉट इजी. एंड जब तक कौम जो है मेहनत के लिए रेडी नहीं होती, कुछ नहीं मिलेगा. लोकल आपको इंस्पेक्टर मिलेगा, एक इंस्पेक्टर मिलेगा, एक कांस्टेबल मिलेगा. बोलिए सर रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक आधा घंटा आके अपने जॉब के बारे में बोलो. पीपल बाय स्टोरीज. If you tell a story, they will buy it. If you give gyan, they will not buy it.
students can participate in counseling in Karnataka also. There are seats which are reserved under the All India quota. Okay, they can register. There are certain seats open for non-Karnataka students. I'm sorry, the private management seats, जो 10 lakh के है ना, for that students from outside Karnataka are eligible. They are eligible only for that. See, they can participate. Say for example, I'll give an example. अगर एक स्टूडेंट जो है सऊदी में 10 साल पढ़ा, कर्नाटक में 2 साल पढ़ा और उसने नीट में 600 मार्क लिए, उस स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी, फीस रहेगी 70,000. एक स्टूडेंट सऊदी में 10 साल पढ़ा, केरला में 2 साल पढ़ा, उसको कर्नाटका में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, even if the student has 602, because that student is not fulfilling the domicile. Domicile helps you get a government seat. If you are not a Karnataka, if you are a Keralite by domicile, you can still get a seat in Karnataka medical colleges only for the management seat, that is 10 lakh. Yeah, I think we are done with it.